गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है स्लो डिपॉजिट ग्रोथ। इकोनॉमी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो आरबीआई गवर्नर ने रिसेंटली बैंक्स को एडवाइस किया है कि वो अपनी न्यू जो है मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन के ऊपर नज़र बना कर रखें, इंक्लूडिंग जो ग्लोबल स्पिल ओवर्स हो रहे हैं हमारी इकोनॉमी पर उसके ऊपर भी। और उन्होंने ये भी बोला है कि जो डिपॉजिट की ग्रोथ स्लो डाउन हो गई है इंडिया में, उसके ऊपर भी जो है वो हमको एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि उससे होगा क्या, फ्यूचर में क्रेडिट ग्रोथ इफेक्ट होगी, है ना। तो क्रेडिट ग्रोथ या क्रेडिट डिमांड क्या होती है, जिससे बेसिकली आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी चलती है। आपके पास जितना पैसा क्रेडिट देने के लिए होगा बैंक्स के पास, उतना ही आपकी इकोनॉमी आगे बढ़ पाएगी, तभी तो है जो है आपकी जो है बिजनेसेस वो आगे एक्सपेंड हो पाएंगे। तो इसीलिए जो है आपके कमर्शियल बैंक की क्रेडिट ग्रोथ जो है उसको स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम डिपॉजिट्स का देखें तो एग्रीगेट डिपॉजिट्स जो हैं वो 2% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ हुए हैं एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। लेकिन जो है ग्रोथ जो है वो स्लो हो गई है। डिपॉजिट ग्रोथ जो है वो बहुत सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन तो नहीं हुई है, लेकिन क्रेडिट ग्रोथ के हिसाब से जो है डिपॉजिट की ग्रोथ कम हुई है। तो अगर लोग बैंक्स के पास डिपॉजिट्स ही नहीं आएंगे तो वो आगे जो है उसको लोन कैसे देंगे, है ना। इसीलिए जो है हमें डिपॉजिट की ग्रोथ को भी कमेंसुरेट रखना ज़रूरी है क्रेडिट ग्रोथ के साथ। तो बैंक की एसेट क्वालिटी के बारे में भी उन्होंने बताया कि ऑफ कोर्स जो हमारे एनपीए हैं वो इम्प्रूव हो गए हैं, लेकिन एमएसएमई सेक्टर के एनपीएस जो है वो राइज होंगे आने वाले टाइम में, लेकिन ओवरऑल एनपीए जो है वो कम होंगे, क्योंकि हमारा जो कॉरपोरेट सेक्टर के एनपीएस जो है वो इम्प्रूव हो चुके हैं। ठीक है। तो अब जो है मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियो ऐसा इमर्ज हो रहा है कि हमारे मार्केट जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो कह रहे हैं कि कॉरपोरेट लोन्स के ऊपर भी दिक्कत आ सकती है, लेकिन उसको हमको कैसे डील करना है, हमको अपने डिपॉजिट ग्रोथ के ऊपर भी फोकस रखना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। आपके पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो सर्विंग ब्यूरोक्रेट्स को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना रही है या इलेक्शन कमिश्नर बना रही है, उसके ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन उठाए हैं। तो उन्होंने बोला है कि एक फेयर और ट्रांसपेरेंट सिस्टम लेके आना ज़रूरी है, जिससे कि ए पॉलिटिकल पीपल जो है वो इलेक्शन कमीशन में आ सके। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ लिप सर्विस पे करता है, और जानबूझकर ऐसे लोगों को पिकअप किया जाता है कि उनका टर्म कुछ महीने का ही रह जाए। क्यों? क्योंकि आपको पता है इलेक्शन कमिश्नर जो है उनकी टेन्योर कैसा होता है, या तो 6 साल या फिर 65 साल। तो ऐसे लोगों को लाया जाता है कि वो 6 साल कभी कंप्लीट ही ना कर पाएँ, और वो उनका टर्म बहुत छोटा रहे। ठीक है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सिलेक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व करो, ताकि ट्रांसपेरेंसी आए जो है चीफ इलेक्शन कमीशन या फिर इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट में। ठीक है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपको पता है 324 आर्टिकल के अंदर बनाए गए हैं। हमारे पार्लियामेंट के इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन, प्रेसिडेंट के इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कराते हैं। तो इनका टेन्योर या तो 6 ईयर्स होता है या फिर एज ऑफ 65 ईयर्स तक होता है, मतलब विच एवर इज़ अर्लियर। सेम स्टेटस और सैलरी इंजॉय करते हैं ये, जो कि जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो जो उनको मिलता है। ठीक है। इनका रिमूवल भी वैसे ही होता है जैसे किसी सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल होता है। और लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आ जाती है, रिटायर्ड इलेक्शन कमिश्नर्स जो हैं वो गवर्नमेंट द्वारा रीअपॉइंटमेंट किसी और पोस्ट पे किए जा सकते हैं। ठीक है। जैसे अब आपको याद होगा 2005 के आसपास जो उस टाइम पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब रिटायर हुए, तो यूपीए गवर्नमेंट ने उन्हें रादर इलेक्शन लड़वा के मंत्री भी बनवाया था, मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स बन गए थे वो। ठीक है। तो ये तो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, है ना। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन परमिट करता है, इसीलिए ऐसा हो पाया। अब कॉम्पोजिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन आपको पता है पहले सिंगल मेंबर बॉडी होती थी, लेकिन 1989 के बाद 2 मोर इलेक्शन कमिश्नर्स डाले गए, और उसके बाद धीरे धीरे जो है वो मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया। सेक्रेटरीट जो है वो एक इंडिपेंडेंट बजट होता है इलेक्शन कमीशन का, जिसको फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ मिलकर कमीशन डिसाइड करता है। और पॉलिटिकल पार्टीज़ के इंडिपेंडेंस, पॉलिटिकल पार्टी में इनर पार्टी डेमोक्रेसी आना, और जो है लेवल प्लेइंग फील्ड देना, रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ करना, ये सब काम भी इलेक्शन कमीशन का होता है ना। सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं फोर्दो अंडरग्राउंड फैसिलिटी। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो कहा जा रहा है न्यूज़ रिपोर्ट्स द्वारा कि ईरान ने 60% एनरिच्ड यूरेनियम प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया है फोर्दो अंडरग्राउंड फैसिलिटी में। 60% एनरिच्ड यूरेनियम जो है, अभी उससे वेपन्स तो नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि लगभग 90% या उससे ज़्यादा एनरिच्ड यूरेनियम चाहिए होता है न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए। लेकिन फिर भी ये JCPOA जो आपकी ईरान का न्यूक्लियर डील थी, उसके टर्म्स के अगेंस्ट है। ठीक है। तो 2015 की जो JCPOA है वो ये कहती है कि 3.67% से ज़्यादा की प्योरिटी का आप जो है वो एनरिच नहीं कर सकते यूरेनियम। और
फोर्डो जो फैसिलिटी है वहाँ पर उस डील में था कि सिर्फ आप इसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी बना सकते हो, यहाँ पर आप नॉन न्यूक्लियर यूज़ के लिए ही इस फैसिलिटी का यूज़ कर सकते हो। लेकिन ईरान ने इन प्रोविजंस को वॉलेट किया है। और फोर्डो जो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट है वो ईरान का सेकेंड पायलट एनरिचमेंट प्लांट है, और इसकी लोकेशन लगभग जो है माउंटेन के अंदर है, और ये कॉम जो माउंटेन है उसके अंदर सिटी ऑफ कॉम में लोकेटेड है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग, सिक्योरिटी टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फोर्थ एडिशन ऑफ इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग जो है वो आज से कल से स्टार्ट हो चुका है, और ये एपेक्स लेवल एनुअल कॉन्फ्रेंस है इंडियन नेवी की। 2018 से इस डायलॉग को किया जा रहा है, नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन जो है वो उसको कंडक्ट कराती है। इस साल का थीम है ऑपरेशनलाइजिंग द इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव। तो फोकस रहेगा इंडो पैसिफिक ही ऑफ कोर्स। पिछले दो एडिशन 2018-19 में हुए थे, और जो तीसरा एडिशन था वो ऑनलाइन मोड में 2021 में किया गया। तो ऑफ कोर्स इसमें मैरीटाइम सिक्योरिटी, मैरीटाइम इकोलॉजी, मैरीटाइम रिसोर्सेज, इन सब के ऊपर फोकस रखा जाता है। इस बार की थीम जो के मुताबिक हॉलिस्टिक मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑफ इंडो पैसिफिक, और हॉलिस्टिक सिक्योरिटी ब्रिजेस बनाना वेस्टर्न और ईस्टर्न मैरीटाइम एक्सपेंस में इंडो पैसिफिक के, इन सब टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन की जा रही है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं लचित बोरफुकन जी। तो ये आपके ऑफ कोर्स आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 400 बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं हम इस बार अहोम जनरल लचित बोरफुकन जी की। तो अहोम कौन थे? जो उन्होंने ऑफ कोर्स 13th सेंचुरी से लेकर लगभग 1838 तक असम को रूल किया है। किंग रुद्र सिंह जो है उनके टाइम पर इनका पीक आया था, और कहा जाता है कि ये अहोम जो है चाइनीज़ यूनान प्रोविंस से आए थे, और ये माइग्रेट होकर बर्मा आ गए, और बर्मा से ऑफ कोर्स असम में बस गए, और इन्होंने हिंदू रिलीजन को अडॉप्ट कर लिया और असामीज़ लैंग्वेज बोलनी शुरू कर दी। लचित बोरफुकन जी जो हैं उनका नाम रचित देखा था ओरिजिनल नाम, और ये सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्मी थे, और इनको जो है बाद में कमांडर इन चीफ भी बनाया गया। बैटल ऑफ सराय घाट में जीत जो है इन्होंने बहुत ही जो है वेलर के साथ उस बैटल को लड़ा ऑन द बैंक्स ऑफ ब्रह्मपुत्र। गेरिला वॉरफेयर टैक्टिक्स यूज़ करना, जो है होम आर्मी को जो है विक्ट्री दिलवाने का काम इन्होंने किया। और कहा जाता है कि मुगल्स भी इनसे इतना डरते थे कि उन्होंने इनको 1 लाख रुपए की जो है वो ब्राइब ऑफर की थी कि वो अपनी आर्मी को छोड़ के चले जाएं, लेकिन फिर भी वो नहीं गए। और इवन जो जब वो ग्रीवियसली इंजर भी हो गए तो भी उन्होंने जो है अपनी आर्मी को में जो है जोश भरा, और अहोम आर्मी को जो है लड़ने के लिए प्रेरित किया। 1999 से नेशनल डिफेंस एकेडमी जो है इंडिया की, वो लचित बोरफुकन गोल्ड मेडल जो है वो बेस्ट पासिंग कैडेट को देती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू पीएम। तो ये आपके गवर्नेंस और इकोनॉमी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इकोनॉमिक एडवाइजरी टू द प्राइम मिनिस्टर ने एक रिपोर्ट निकाली है, एक वर्किंग पेपर निकाला है, जिसमें कहा है कि इंडिया की जो रैंकिंग्स आ रही है ग्लोबल ओपिनियन बेस्ड एंडाइसिस पे, इन द मेथड ऑफ इन द डेमोक्रेसी सॉरी इन द डेमोक्रेसी डोमेन, उसमें सीरियस प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कि जो ये 3 इंडेक्स की बात की गई है, फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स, वी डेम इंडेक्स और EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स। तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ये जो इंडाइसिस इस पे यूज़ किए गए हैं वो ओपिनियन के ऊपर यूज़ किए गए हैं, और वो भी बहुत ही कम लोगों के ओपिनियन पे। क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं बहुत सब्जेक्टिव हैं, और अप्रोप्रिएट मेजर्स नहीं दिखाते वो ऐसे क्वेश्चंस जो है डेमोक्रेसी का। तो ऑफ कोर्स ये प्राइम मिनिस्टर की एडवाइजरी, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन स्टैट्यूटरी, नॉन परमानेंट बॉडी है। प्राइम मिनिस्टर को इन्फ्लेशन, GDP चेंजेस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट चेंजेस, या जो भी रिपोर्ट, चाहे वो पीरियोडिक मैक्रो इकोनॉमिक रिपोर्ट्स हों, इवन पॉलिटिकल या स्ट्रेटजिक रिपोर्ट्स भी जो है मैक्रो इकोनॉमिक इशूज़ की जो है प्राइम मिनिस्टर को देने का काम करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अरितापति एंड मीनाक्षीपुरम विलेजेस। इन्वायरमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने रिसेंटली नोटिफिकेशन निकाली है, और अरितापति और मीनाक्षीपुरम विलेजेस जो है मदुराई डिस्ट्रिक्ट को, उनको फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट जो है वो स्टेट में डिक्लेयर किया है। तो मोटिव ये है कि बायोडाइवर्सिटी के लॉस को रोकना और कल्चरल और आर्किटेक्चरल हेरिटेज को रिकॉग्नाइज करना अरितापति के बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट में। तो लगभग 139.63 हेक्टेयर्स का अरितापति विलेज है। अरितापति जो है वो इकोलॉजिकल और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लागर फैल्कॉन, शाहीन फैल्कॉन और बोनालीज ईगल जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। इंडियन पेंगोलिन भी जो है यहाँ पर पाया जाता है, पाइथन भी पाया जाता है, स्लेंडर लॉरिस हमने भी कुछ दिन पहले किया था, ये भी यहाँ पर पाया जाता है। तो ये आपके इसको प्रिजर्व करने के लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं गुत्ती कोया ट्राइबल्स। सोशल इश्यूज़ के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो एक फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर को ब्रूटली मार दिया गया है गुत्ती कोया आदिवासी द्वारा तेलंगाना के भद्रादरी
कोठागुडेम डिस्ट्रिक्ट में। तो ये कोया पॉपुलेशन बेसिकली तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में जो है वो कंसनट्रेटेड है। कोया लैंग्वेज बोलते हैं, द्रविडियन लैंग्वेज है जो कि। और समक्का सरलाम यात्रा ये है, दो साल में एक बार कंडक्ट की जाती है माघ मासम में। मेदाराम विलेज जो है वहाँ पर इसको जो है कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये क्योंकि फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर जो है इनको पोडू कल्टीवेशन करने से रोक रहे थे, तो इसके लिए ही जो है इनको मारा गया है। तो पोडू कल्टीवेशन क्या होती है? काइंड ऑफ अ शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है, जिसमें जो है जो है आपके फार्म को जला दिया जाता है बिफोर जो वहाँ पर न्यू क्रॉप उगाने से पहले। तो उसी को रोका जा रहा था, लेकिन फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर को उसकी वजह से मार दिया गया है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is slow deposit growth. This topic is important for our economy section. So Governor of RBI has recently advised banks to remain vigilant of the evolving macroeconomic situation, including of course global slipovers. Spillovers, and he has also expressed concern about the slowing down of deposit growth in relation to of course credit growth. You know that credit demand means how economic activity would rise in the country. So once you start dispersing credit in the economy, of course the businesses start expand due to it. And if there is a slowdown, then of course credit also suffers. But we are suffering from a different problem here. The credit demand or the credit growth in India is seeing a spike, but but the commensurate deposit growth is not. But the commensurate growth in deposit is not visible. What is happening here is that aggregate deposits may be increasing, but they are not increasing at the same pace as that of credit growth. So what it would mean, if the banks would not get deposits, then how would they lend the money to the businesses, and then how would the economy expand? So this is the problem. Despite the fact that banks asset quality is improving, the gross NPAs have consistently dropped, and net NPAs have fallen to 1% of total assets now. Of course MSME NPAs will increase, but overall NPAs of the banks will be falling, because corporate loan book is deleveraging, and it is showing improvement in asset quality. But in the light of emerging global macroeconomic scenario, market participants have expressed concern that about the corporate loans also. If these start turning into bad loans, then of course this accompanying with the slowdown in the deposit growth, we could see an economic problem here. Okay, so the next topic is Chief Election Commissioner. Of course, this topic is important for our polity section. So Supreme Court has raised several questions on the present system of central government appointing serving bureaucrats of its choice as Chief Election Commissioner and election commissioners. So of course, the Supreme Court has said that a fair and transparent system needs to be adopted to appoint the best apolitical people with strong character to such positions. So Supreme Court has observed that central government pays merely lip service to the independence of election commissioners. Uh, Such people are picked up by the government who are known to be getting close to the full 6 years term, and it is they are chosen in such a way that they never get to complete the entire term. So you know that their term is either 6 years or 65 years, whichever is earlier. Okay, and that's why the bench has noted that Chief Justice of India should be involved in the selection process of the election commissioners, so that transparency can be ensured. So you know that Election Commission of India is under the Article 324 of the Indian Constitution. It's a permanent and independent body. It conducts elections to the Parliament, state legislature, office of President and Vice President of India, and the President appoints the Chief Election Commission and the election commissioners. They have a tenure of 6 years or up to the age of 65 years. They receive same status and receive same salary and perks as that of judges to the Supreme Court of India. They can be removed from office on the same grounds as that of the judge of the Supreme Court. There is no prescribed qualification for the members of election commission, and the bad thing here is that they're not even debarred from reappointment in the government of India or any other government. So of course, initially the election commission was a single member body, but later on two more election commissioners were added in by the president in 1989. Since then it has become a multi-member body. So the secretariat of the commission is having an independent budget, which is finalized after consultation with the finance ministry, and
The election commission also has a duty to ensure a level playing field for the political parties, and it also registers the political parties. It also ensures inner party democracy is there. It is also a part of it is also having a quasi judicial jurisdiction. It also settles dispute between the groups of recognized parties. Okay, so the next topic is Fordo underground facility. This topic is important for international relations. So Iran has recently started producing uranium, which is enriched to 60% at the Fordo underground facility. You know that weapons require uranium enriched to 90% or higher, but Iran has reached 60% capacity. But it is still violating the 2015 JCPOA agreement, that is the Iran nuclear deal, in which Iran is only permitted to enrich uranium up to 3.67% of purity, and it is also debarred from using Fordo facility for nuclear uses. So Fordo facility is Iran's second pilot enrichment plant. It is located buried in a mountain near the city of Qom. So the next topic is Indo-Pacific Regional Dialogue. This topic is important for our security section. So fourth edition of Indo-Pacific Regional Dialogue will be starting, has started rather since yesterday. It's an apex level international annual conference of the Indian Navy, which started in 2018. National Maritime Foundation is the knowledge partner of Indian Navy and chief organizer of such events. So this year the theme is operationalizing the Indo-Pacific Oceans Initiative. It provides a platform to focus attention on the Indo-Pacific. The first two editions were conducted in 2018 and 19. The third one was, of course, held in 2021. It focuses on maritime security, maritime ecology, maritime resources, etc. And the focus, of course, is broadly on the Indo-Pacific region. So the next topic is Lachit Borphukanji. So this topic is important for our art and culture section. So 3-day long celebration of 400th birth anniversary of Ahom General Lachit Borphukan has been started now. So you know that Ahoms were the people who were the tribes that ruled much of Assam from 13th century to almost 1838. King Rudra Singh was the Ahom under whose reign the Ahom power reached its peak. It is being said that these Ahoms came from Chinese province of Yunnan, and they began migrating to Indochina and northern Myanmar. From there, they reached the Assam region, and they accepted Hindu religion and Assamese language. So about Lachit Borphukanji, this day is his original name was, of course, Lachit Deka, and he took the role of supreme commander of the army. He also was elevated to the commander in chief of the Ahom army. He valorly led the Battle of Saraighat and in Brahmaputra, on the banks of Brahmaputra, and he used guerrilla tactics, and which led to the victory of Home Army. He was also offered a bribe of 1 lakh to abandon his army by the Mughal army, because they knew that his valor and power is so unique that he could win even against the Mughals. But of course, he did not yield to it. Since 1999, the National Defence Academy of India has also been awarding the best passing cadet with the Lachit Borphukan Gold Medal. So the next topic is Economic Advisory Council to the Prime Minister. This topic is important for your governance and economy section both. So Economic Advisory Council to the Prime Minister of India has recently issued a working paper which says that decline in India's rankings on a number of global opinion-based indices are due to the serious problems with the methodology that these indexes have been using. So particularly Freedom in the World Index, VDEM indices, EIU Democracy Index, these perception-based indices have been analyzed, and the paper says that these indices are using opinions of a tiny group of unknown experts, and the questions are very subjective. These questions do not even reflect the measures of democracy. So the Prime Minister's Economic Advisory Council is a non-constitutional and non-statutory, non-permanent independent body. It analyzes all the critical issues, not just the economic, but any issue which is being referred by the Prime Minister to him. By the Prime Minister to this body, like this issue of analyzing the indices has also been referred by the Prime Minister to them. So they submit periodic reports to the Prime Minister and also give him suggestions regarding the macroeconomic issues.
So the next topic is Aritapati and Meenakshipuram villages. This topic is important for our environment section. So Tamil Nadu government has recently issued a notification declaring Aritapati and Meenakshipuram villages as the first biodiversity heritage site in the state. The aim is to prevent the loss of biodiversity and preserve the cultural and architectural heritage of these villages. Okay, so they have ecological and historical significance. Three important raptors are found here: falcon, Shaheen falcon, and even Bonali's eagle. Even the Indian pangolin and python and slender loris is also home to this to these. I'm sorry. The Indian pangolin, python, and slender loris also find a home in this region. So the next topic is Gutti Koya tribals. This topic is important for your social issues. So, a forest range officer was recently killed by a group of Gutti Koya Adivasis because he was protesting against the Podu land issue in the Telangana's Bhadradri Kothagudem district. So, Koya population is concentrated in Telangana, Andhra Pradesh, Chhattisgarh, and Odisha. They speak the Koya language, which is the Dravidian language, and they celebrate the Samakka Saralam Jatra once in 2 years. What is Podu cultivation? It's a form of shifting cultivation in which the farm is burnt before the sowing of new crops. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.